शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम लोगों ने कल से वी स्टार्टेड परसों से Friday we have offline classes, so Friday we won't have, but other than Friday then every day we will have Bhagavatam half an hour. So हम लोगों ने पहला श्लोक शुरू किया था परसों, और रोनी प्रभु कैन यू put that, and did we ask for the okay No, Prabhu, we did not ask. okay, so who remembers जो हमने कल श्लोक पढ़ा था? Just highlight the श्लोक प्रभु जी, without the meaning, just put on the screen just the shloka. So I want to ask who remembers, what is these lines meant? क्योंकि हमने पहले मीनिंग पढ़ा था हर एक लाइन का। वो श्लोक में पढ़ देता हूँ, then each of you can raise hands, or then I'll ask randomly, but better you raise the hands who can tell each line, just one line, quickly. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य तो अन्वयादितरस चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यः सूरया तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो ये जो है ये मंगलाचरण भी है, और जैसे हम श्लोक पढ़ेंगे पहले भागवतम के पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक। तो जो पहला श्लोक है इट टॉक्स अबाउट संबंध, सेकंड अबाउट अभिदय, एंड थर्ड अबाउट प्रयोजन। 1.1, 1.112, 1.113। so each one, so tell me who remembers what is the meaning अभी हाइड कर लो। who remembers what is the meaning of ओम नमो भगवते वासुदेवाय? क्या पढ़ा था हमने? Who remembers what is the meaning of ओम नमो भगवते वासुदेवाय? ये लाइन क्यों लिखी है? Okay, yes, Ronnie Prabhu, tell why has this line been written? ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Prabhu, it means that that Srila Vyasadeva ji is offering the humble obeisances unto the Supreme Personality of Godhead. Yes, so correct, and it also means that that Krishna is the Supreme Personality of Godhead because it's called Bhagavad Puran, Yes. which means the Puran which speaks about Bhagavan. जैसे शिव पुराण शिव जी के लिए, देवी पुराण देवी के लिए, अलग अलग पुराण अलग अलग देवताओं के लिए है, बट इस पुराण का नाम क्या है? भागवत पुराण. सो हु इज द भगवान इज बीइंग एड्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द मंगलाचरण. व्यासदेव is saying ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So वासुदेवाय, प्रभुपाद we will explain, it is son of देवकी एंड वसुदेव. कृष्ण की बात हो रही है इसके अंदर. ओके, जन्मादस्य यतो. Who remembers what is the meaning? जन्मादस्य यतो अन्वयादितरस चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट. इसमें जो दो तीन वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो जन्मादस्य, जन्माद्य अस्य, देन अन्वयादितरस, देन अभिज्ञा स्वराट. Who remembers what is the meaning? Yes, Shivani Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Janmadasya means janam, creation, and destruction. Very good. Yes. Thank you, Mataji. और अन्वयादितरस? Yes. Ashtaki Vrinda Mataji.
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था कि जितनी भी, चाहे वो जन्म मृत्यु, या हम जो पढ़ रहे हैं कि जो जन्म हो रहा है या मृत्यु हो रही है, या जो सस्टेनेंस है, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भगवान पे ही डिपेंडेंट है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग, मतलब जैसे लोगों का वो होता है कि ये इनका क्रिएटर मतलब ब्रह्मा जी हैं, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान से ही हो रहा है। हाँ, करेक्ट है ना। सो अन्वयाद इतरतस मीन्स कि लॉर्ड इज बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एवरीथिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि ही इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली नॉट रिस्पॉन्सिबल, और ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ, सो ये आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, देन टू मोर वर्ड्स इंपॉर्टेंट, अभिज्ञा स्वराट. Anybody remembers what is the meaning of these words, Abhigya Swarat? Prabhuji, Swarat, I remember that that Krishna is completely independent and there is no other cause behind him. Correct. So Swarat means he is supremely independent. Other than Krishna, everybody is dependent upon Krishna in some way or other. But Krishna is Swarat, and Abhigya means he knows everything. He knows about everything. So ये जो दो qualities हैं, Abhigya और Swarat, they distinguish God from Jiva. Like this. Krishna. So like this. Then Tene Brahma Hide Yadi Kavye. इसमें जो Brahma लिखा है, it's not Brahma ji. This Brahma means Shabda Brahma. So then whole transcendental knowledge was revealed to Adi Kavye means Brahma ji. So it was revealed to in the heart of Brahma ji. Or Muyanti Yat Surya. So Muyanti Yat Surya means कि बड़े-बड़े जो देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, they also get bewildered. Then Tejo Vari Mridam. So earth, water, fire. So in one we see another. That's how they get bewildered. Vinimyo Yatra Trisargo Amrisha. So it means कि ये जो सारा जगत चल रहा है, ये तीनों जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण है, तीनों गुणों के मिश्रण से, एक्शन रिएक्शन से चल रहा है. It looks like real, but it is not real. धामना स्वेना. सो जो भगवान का जो धाम है, वो धामना स्वेना सदा निरस्त कुहुकम. सो जो भगवान का धाम है, उसमें जो माया शक्ति है, इट हैज नो प्रभाव. सत्यम परम धीमहि. उस परम सत्य वासुदेव के ऊपर, भगवान के ऊपर मैं ध्यान करता हूँ. तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है. जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबसे लंबा, आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पर्पट्स प्रभुपाद हैज रिटन ऑन दिस श्लोक. और जो उनके गुरु महाराज थे प्रभुपाद के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 3 महीने तक हर रोज इसके ऊपर लेक्चर दिया था, इस श्लोक के ऊपर, बांग्लादेश के अंदर. So we can understand how important is this shlok. So we'll start reading from where we left yesterday. Yes, Ronnie Prabhu, scroll it down, please. And those who want to read, they can raise their hand. Srimad Bhagavatam is the narration of the Swarup of the Lord manifested by his internal potency. And his potency is distinguished from external potency which has manifested the cosmic world, which is within our experience. तो जो भगवान का स्वरूप है, वो भगवान की योग शक्ति से होता है, और ये जो भौतिक जगत है, ये सारा माया शक्ति से ये सारा बनता है. Srila Vyasdev makes a clear distinction between the two in this shloka. Sri Vyasdev herein says that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy in the form of material existence is only temporary and illusory, like the mirage in the desert. In the desert mirage, there is no actual water. There is only the appearance of the water. Real water is somewhere else. तो ये जो उदाहरण है बार बार क्यों दिए जाते हैं, ये कि एक इल्यूजन की तरह है, मिराज की तरह है. इसलिए क्योंकि अगर हमें रेगिस्तान में जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमें जहाँ रेत है वहाँ बालू है, जहाँ पानी नजर आता है, तो वहाँ पानी नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि पानी कहीं है ही नहीं. इट मीन्स वाटर एग्जिस्ट समवेयर, बट इट डजंट एग्जिस्ट देयर. बट वाटर डज एग्जिस्ट. इसी तरह से
ये जो भौतिक जगत है, it appears to be eternal, it appears to be true, but it is not. But real world is somewhere there because उनका उस real world का ये प्रतिबिंब है. Okay, the manifested cosmic creation appears as reality, but reality of which this is but a shadow is in the spiritual world. Absolute truth is in the spiritual sky, not the material sky. In the material sky, everything is relative truth. That is to say, one truth depends on something else. This cosmic creation results from the interaction of the three modes of nature. And the temporary manifestations are so created as to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul, who appears in so many species of life, including the demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in the manifested world. There appears to be reality, however, because the true reality which exists in the spiritual world, where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. तो ये जो हमने चर्चा की उसी तरह से कि यहाँ पर दिखता कुछ और है कुछ और, पर इसकी एनालॉजी का इसलिए दी गई है कि जिस चीज पे हमें मोह हो रहा है कि बालू में पानी दिख रहा है पर वो पानी यहाँ नहीं है, पर दैट डजंट मीन पानी कहीं भी नहीं है. सो ये जो है सारी की सारी जो सृष्टि है, ये एक छाया की तरह है, शैडो की तरह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, लाइक दिस. ओके, सो नाउ ये हमने किया. अब जो अगला सेक्शन आ रहा है वो किस तरह से भगवान जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ही इज इन्वॉल्व, अब उसके ऊपर प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं इस पैराग्राफ में. The chief engineer of a complicated construction does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction, both directly and indirectly. Similarly, the personality of Godhead, who is the supreme engineer of the cosmic creation, knows every nook and corner, although affairs are being carried out by demigods. Beginning from Brahma down to the insignificant ant, no one is independent in the material creation. The hand of the Lord is seen everywhere. All material elements as well as all spiritual sparks emanate from him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, material and spiritual. ये भगवद गीता में भी आता है, परा और अपरा शक्ति, भगवान 7वें अध्याय में बोलते हैं, which emanate from the absolute truth, the personality of Godhead, Shri Krishna. So ये उदाहरण आपको समझ में आया? आप में से कोई है जो who's an engineer or who's a project leader in his company? Who's a project leader in the company? Raise the hand. Like a project leader or a project lead or a high post engineer. Who has raised the hand? Okay. Yes, Shivani Mataji, you are a project lead? Yes, Prabhuji. Okay. So अगर आप कोई project lead कर रहे हैं, then what happens? मतलब कि it means are you doing all the work? No, Prabhuji. Okay. So आप क्या करते हो? You delegate the work? Yes, basically उसका architect पूरा design करते हैं and then delegate work to everybody who is proficient in that specific task. Okay. But being the project lead, you are aware कि कौन किसने क्या काम करना है और वो क्या कर रहा है. Yes, Prabhuji. है ना? But you yourself are not doing that work personally. है ना? Thank you. तो इसी तरह से जो भगवान है, ये जो एग्जाम्पल दिया चीफ इंजीनियर का कि everything comes from Lord. He has delegated various demigods for each task. He knows what is happening, but he himself is not involved into day-to-day micromanagement. Okay. Who wants to read? Raise the hands. Okay. Ronnie Prabhu, go ahead. The chief engineer of a complicated construction does not personally ये take तो हमने पढ़ लिया था प्रभु जी, ये तो हमने पढ़ लिया था. part- You were in the middle. A chemist can manufacture.
अभी दूसरा एग्जांपल है, एक चीफ इंजीनियर का दिया, आप प्रभुपाद केमिस्ट का एग्जांपल दे रहे हैं. A chemist can manufacture water in the chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen. But in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord. And the materials with which he works are also supplied by the Lord. The Lord knows everything directly and indirectly, and he is cognizant of all minute details, and he is fully independent. He is compared to a mine of gold, and the cosmic creations in so many different forms are compared to objects made from the gold, such as gold rings, necklaces, and so on. The gold ring and the gold necklace are qualitatively one with the gold in the mine, but quantitatively, the gold in the mine is different. Therefore, the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolutely equal with the absolute truth, but at the same time, nothing is independent of the absolute. Conditioned souls. So ये जिस एग्जांपल दिया कि गोल्ड और गहने हैं, वो जो सोने की खान से आए हैं, सब कुछ सोने की खान से आया है. तो जो सोने के गहने हैं, हाँ, या और जो सोने की खान है, उसमें क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं है, दोनों ही सोना है. बट फर्क क्या है, एक स्त्रोत्र है और एक, हाँ, उस स्त्रोत्र से चीजें निकल के उससे बनी है, लाइक दिस. सो एंड क्वांटिटेटिवली देयर इज ए डिफरेंस. सो ये जो हमारा चिंत्य भेद भेद तत्व है, उसकी बात हो रही है. यस प्रभु, गो अहेड. Conditioned souls beginning from Brahma, who engineers the entire universe, down to the insignificant ant, are all creating, but none of them is independent of the Supreme Lord. The materialist wrongly thinks that there is no creator other than his own self. This is called Maya or illusion. Because of his poor fund of knowledge, the materialist cannot see beyond the purview of his imperfect senses, and thus he thinks that matter automatically takes its own shape without the aid of a superior intelligence. This is refuted in this shloka by Srila Vyasdev. Since the complete whole or the absolute truth is the source of everything, nothing can be independent of the body of the absolute truth. Whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Similarly, the creation is the body of the absolute whole. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly that happens in the creation. तो एक और उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि जिस तरह कि एक आत्मा जो है वो इस देह के अंदर है, सो एम्बॉडीड सोल. तो आई नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय बॉडी. आई एम स्क्रैचिंग, समथिंग इज हिटिंग मी. So I know everything within my body. I am aware of everything, consciously, subconsciously, everything I am aware of. So similarly, जो ये पूरा जो भगवान का जो विराट पुरुष जो माने जाता है कि जो पूरा जो यूनिवर्स है, it is like the body of the Lord, and Lord is the soul in that body. So similarly, जैसे एक मुझे अपने शरीर के बारे में एक देहधारी को मालूम है, उसी तरह से भगवान को भी उनके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा जो यूनिवर्स है भगवान का वो शरीर है, तो ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन हिज बॉडी. सो इस जो विराट पुरुष है, जो अवतार मानते हैं, जो विराट पुरुष है, देयर इज नो विराट पुरुष अवतार पर से, बट इट इज एक्सप्लेन्ड इन मेनी प्लेसेस कि द यूनिवर्स इज लाइक द बॉडी ऑफ द गॉड. So then in that analogy कि जो उसकी जो आत्मा है वो भगवान है, और जैसे एक आत्मा को शरीर के बारे में सब पता है, उसी तरह से भगवान को इस पूरे जगत के बारे में सब कुछ मालूम है. ओके, सो नेक्स्ट आनंद विलासिनी राधा माता जी, गो अहेड, यू कैन रीड. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. In the Shruti mantras, in the Shruti mantra, it is also stated that the absolute whole or Brahman is the ultimate source of everything. Everything emanates from him and everything is maintained by him. And at the end, everything enters into him. That is the law of nature. In the Smriti mantra, the same is confirmed. It is said that the source from which everything emanates at the beginning of Brahma's millennium and the reservoir to which everything ultimately enters is the absolute truth of Brahman.
Material scientists take it for granted that the ultimate source of the planetary system is the sun, but they are unable to explain the source of the sun. Herein, the ultimate source is explained. According to the Vedic literatures, Brahma, who may be compared to the sun, is not the ultimate creator. It is stated in the shloka that Brahma was taught Vedic knowledge by the personality of Godhead. One may argue that Brahma, being the original living being, could not be inspired because there was no other being living at that time. Herein it is stated that the Supreme Lord inspired the secondary creator Brahma in order that Brahma could carry out his creative functions. So the supreme intelligence behind all creations is the absolute Godhead Sri Krishna. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna states that it is he only who superintends the creative energy, Prakriti, which constitute the totality of matter. Therefore, Sri Vyasadeva does not worship Brahma, but the Supreme Lord who guides Brahma in his creative activities. In this shloka, the particular words Abhigya and Swarat are significant. These two words distinguish the Supreme Lord from all the other living entities. No other living entity is either Abhigya or Swarat. This is no one is either fully cognizant or fully independent. Even Brahma has to meditate upon the Supreme Lord in order to create. Then, what to speak of great scientists like Einstein? The brains of such a scientist are certainly not the products of any human being. Scientists cannot manufacture such a brain, and what to speak of foolish atheists who defy the authority of the Lord. Even Mayavadi impersonalists who flatter themselves that they can become one with the Lord are neither Abhigya nor Swarat. Such impersonalists undergo severe austerities to acquire knowledge to become one with the Lord. But ultimately, they become dependent on some rich disciple who supplies them with money to build monasteries and temples. Atheists like Ravan or Hiranyakashipu had to undergo severe penances before they could flout the authority of the Lord. But ultimately, they were rendered helpless and could not save themselves when the Lord appeared before them as cruel death. This is also the case with the modern atheist who also dare to flout the authority of the Lord. Such atheists will be dealt with similarly, for history repeats itself. Whenever men neglect the authority of the Lord, nature and her laws are there to penalize them. This is confirmed in Bhagavad Gita in the well-known verse, Yada yada hi dharmasya glanir. Whenever there is a decline of dharma and a rise of adharma, O Arjun, then I incarnate myself. Thank you, ma'am. So we can see why Vyasadeva is not worshipping Brahma ji, because he is not independent. और उनका भी जो ज्ञान है वो सारा का सारा वो भगवान से आ रहा है ना. कोई व्यक्ति कह सकता है कि ब्रह्मा जी ने तप किया और उनको आत्म साक्षात्कार हुआ अपने आप, पर ऐसा नहीं हुआ. तेने ब्रह्मा हृदय सो आदि कवे. सो वो जो ब्रह्मा जी के हृदय में जो भी ज्ञान प्रकट हुआ वो सारा का सारा कृष्ण से आया. इसलिए वो कह रहे हैं प्रभुपाद कि ओम नमो भगवते ब्रह्मनाय नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञान आया वो सारा सारा कृष्ण से आया. ही इंडिपेंडेंटली डिड नॉट हैड ए सेल्फ मैनिफेस्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ. ओके, नेक्स्ट who's there? Yes, Shivani Mataji, go ahead. That the Supreme Lord is all perfect is confirmed in all Shruti mantras. It is said in the Shruti mantras that all perfect Lord threw a glance over matter and thus created all living beings. The living beings are part and parcel of the Lord, and he impregnates the vast material creation with the seed of spiritual sparks, and thus the creative energies are set in motion to enact so many wonderful creations. An atheist may argue that the God is no more expert than a watchmaker,
But of course, God is greater because he can create machines in duplicate male and female forms. The male and female forms of different type of machineries go on producing innumerable similar machines without God's further attention. If a man could manufacture such a set of machines that could produce other machines without his attention, then he could approach the intelligence of God. But that is not possible, for each machine has to be handled individually. Therefore, no one can create as well as God. Another name of God is Asamordhava, which means that no one is equal to or greater than him. Param Satyam, or the supreme truth, is he who has no equal or superior. That is confirmed in Shruti mantras. It is said that before the creation of material universe, there existed the Lord only, who is the master of everyone. The Lord instructed Brahma in Vedic knowledge. The Lord has to be obeyed in all respects. Anyone who wants to get rid of material entanglement must surrender unto him. That is also confirmed in Bhagavad Gita. Thank you, Mataji. तो ये हमने, ये थोड़ा सा लंबा परपर्ट है, तो इसमें 1-2 दिन लगेंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे, पर इसको पढ़ते जाएंगे, और अगर आप घर में भी पढ़ेंगे इसको, जो भी हम पढ़ते हैं उसको बाद में थोड़ा सा मनन करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से ये जो भागवतम का जितना महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आप बड़ी आसानी से तो समझ जाएंगे. सो पोटेंसी इज जस्ट टू हियर अटेंटिवली. सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको पढ़िए, और जो अगले दिन भी पढ़ने वाला है वो भी पढ़िए. तो आप जब हम इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे सब लोग, तो यू विल फाइंड कि आवर अंडरस्टैंडिंग विल ऑटोमेटिकली बिकम बेटर. दिस इज द पोटेंसी ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स. सो इट्स ऑलरेडी 8:15. तो हमने टाइम चेंज कर दिया बिकॉज सब लोग, कुछ लोगों का वो भक्ति शास्त्री चल रहा है, तो दे सेट कि अगर आप 7:45 से 8:15 करेंगे तो ये टाइम हमें सूट करता है. सो दैट्स व्हाई. So other than Friday, every day we'll have class from 7:45 to 8:15. So thank you so much for joining Nityam Bhagavad Sevaya. So Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnavind ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dhanwad Pranam. Can I recite